अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की जानिब से लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क की खुली फजा में जश्न आज़ादी पाकिस्तान 2020 का पहला शानदार प्रोग्राम मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों की यकजहती के साथ मुनक्कद हुआ। है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे। इस प्रोग्राम में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा आयशा अली, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबलीमैन बॉबी कैरल, काउंसिलमैन मैथ्यू यूजीन और कांग्रेस वुमेन इवेट क्लार्क की नुमाइंदा के साथ साथ पाकिस्तानी तंजीमों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। इस मौके पे अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हर साल की तरह इस्लामिक रिलीफ यूएसए के ताउन से कुर्बानी का गोश्त और खाने भी जरूरतमंदों में तकसीम किए। असेंबलीमैन रॉबर्ट कैरल और काउंसिल जनरल मोहतरमा आयशा अली ने अपने हाथों से गोश्त भी तकसीम किया। अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की डायरेक्टर और फाउंडर मोहतरमा बाज़ा रूही ने काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा आयशा अली को चादर का तोहफा पेश किया। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के फ्लैग्स भी बने हुए थे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के कुछ खास हिस्से। Who represents our Pakistani community and who has consistently provided her support to us. Amidst the COVID-19 pandemic, she held a virtual town hall meeting in order to lend support to the New York State by the Pakistani American community. She highlighted the relief efforts of many Pakistani organizations throughout the state, honoring our work. We are in awe of her involvement with our community and would now like to give her a few moments to share her thoughts on today's events. बहुत शुक्रिया बाज़ा रूही और आपकी जितने भी American Council for Minority Women. Thank you so much for doing this and for arranging Pakistan Independence Day celebration. एक तो सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक, Pakistan Independence Day. Happy Independence Day to everyone. Thank you so much for giving me this opportunity. बाज़ा मैं आपको बहुत appreciate करना चाह रही हूँ। बाज़ा रूही और उनकी काउंसिल ने पैंडेमिक के दौरान एक बहुत अहम काम सरअंजाम दिए हैं जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की और बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ की एक बहुत मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं आपके इस काम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लीडरशिप एंड फॉर द लीडर एवरीवन। आई एम सॉरी आई डोंट नो एवरीवन्स नेम्स बट आई वांट टू रिकॉग्नाइज एवरीवन्स एफर्ट्स। इंडिपेंडेंस डे के हवाले से आपको बताना चाहती हूँ कि हर साल हम इस दिन को मनाते हैं टू कमेमोरेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 की सिचुएशन पाकिस्तान में अब काफ़ी हद तक बेहतर होती जा रही है। While we're not completely out of the woods, but still we're making very good progress, alhamdulillah. और जो प्रोजेक्शंस पहले की जा रही थी अब वो प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम बहुत बेहतर तरीके से इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो रिकवर हो चुके हैं। एक हमारी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की उसके भी बहुत सारे सेक्टर्स अब खुल रहे हैं। We're looking forward to a very robust and complete economic recovery. So that is a very good news. During pandemic also, government of Pakistan ने बहुत सारे इक़दामात उठाए अपनी पॉपुलेशन के लिए और अपने लोगों का ख्याल रखने के लिए, जिसमें एहसास प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगी जिसने बहुत सारे 120 मिलियन फैमिलीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से। इसके अलावा आपकी तरह बाज़ा हमारी बहुत सारी पाकिस्तानी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस ने और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी लीडर्स ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर पैंडेमिक के दौरान न्यूयॉर्क में जो कि हार्डेस्ट हिट था जिस तरह से लोगों की मदद की और जिस तरह कम्युनिटीज़ की मदद की, आई थिंक इसकी कोई और मिसाल नहीं होती और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए आपके जज्बे की उतना ही कम है। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस मीट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एंड फॉर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। बहुत खुशी हो रही है एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात करके और अपनी कम्युनिटी के लोगों से और यहाँ पर आकर और देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लोग जज्बे के साथ इस मुहिम में शामिल हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। थैंक यू।
थैंक यू सो मच एंड मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ मिलकर कुर्बानी का गोश्त भी बांटें, जो कि इस्लामिक रिलीफ और इकना रिलीफ के बाद हमारी जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतने बड़े पैमाने पे हर साल मोर देन 2500 पाउंड जो है वो हम भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने कश्मीर के साथ भी सॉलिडरिटी का सबूत देते हुए हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का कलर ग्रीन से रेड कर लिया है। अब देखने से पहले हमारा जो लोगो था वो ग्रीन था, अब हमारा जो नया है वो रेड। It is so wonderful to see our communities in Brooklyn coming together to serve the neediest and serve those in this great time of need. COVID-19 is still such a huge burden on so many of our families, and we're so lucky to have women like this and organizations like this be able to step up and serve our families. I'm so happy to be here and be a part of it in any way that I can be helpful in the future. Please let me know. And it's hopefully we'll have a much better 2021 than 2020. Yes. Yeah, and thank you so much, Mr. Roberts. Always pleasure to see you, to meet you, and you know we love you. Yes, thank you, Basla. And we was with you, and we will be with you. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you, and thank you all so much for this work. This is such fantastic. That's really the most important thing, to work here. My name is Ume Kulsum Bhatt, and I am event coordinator manager of ACMW team organization, and it's a pleasure to welcome Mr. Assemblyman Mr. Robert Carroll. So he's also Baza's very good friend. I would first like to introduce politician and attorney Robert Carroll, who has continuously involved himself in our community. Robert became the youngest president of the Central Brooklyn Independent Democrats and also served as a member of Brooklyn Community Board 7. He has tirelessly worked for the betterment of our community, and I would now like for him to say a few words. The floor is yours, Robert. Good afternoon. Thank you so much, Liz, for that wonderful introduction. And it's great to be here on Coney Island Avenue with the American Council of Minority Women and Baza Ruhi, who is such a wonderful community leader, and all of the women who are here and do so much great work in our community, and especially during these very, very tough times, these very difficult times where so many people are in need of assistance with their rent, with food, with jobs. And we're lucky to have organizations like this to help our families in need. I am usually here on Coney Island Avenue during this time in August to celebrate Pakistani Independence Day. I know that we'll all be celebrating next year together, and I know that there are celebrations throughout the week that I'll be able to attend, but they won't be the same. Like nothing's been the same this year. But I'm glad to be here. We're so lucky to have the American Council of Minority Women and Baza Ruhi and all of you helping the Brooklyn community and helping families in need. And so thank you so much for being such a great friend. And any way that I can be my friend, I'm always looking forward to it. Hello. Yes, thank you so much, Robert. It's really love to see you again and again, and you always here for Pakistani communities. You helped us, and now he is, mashallah, is distributing a food, and we also have a Qurbani meat distribution, which is our 11th meat distribution event. It's wonderful to be here with the American Council of Minority Women and Baza Ruhi, and to be here with Shireen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, मैं बाज़ा रूही को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ. तमाम ACMW टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ. और आज सिर्फ इतना हम एक चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, हमारे साथ आज वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं. CG हैं हमारी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ न्यूयॉर्क से.
And I want to commend the entire Pakistani community how we handled the COVID-19 situation. I don't think any other nation, any other ethnicity اس طرح اٹھی جس طرح پاکستانی امریکنز اس مصیبت میں اٹھے ہیں, اس کووڈ-19 پینڈیمک میں اٹھے ہیں. اور یہ وہ کمیونٹی ہے جس کے پاس ریسورسز سٹی گورنمنٹ سے, اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بہت لیٹ آئے ہیں. ٹرانسلیٹڈ ریسورسز, ٹیسٹنگ, ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ, اینٹی باڈی ٹیسٹنگ, فوڈ انسیکیورٹیز, یہ سب چیزیں بہت لیٹ پہنچی ہیں ہمارے پاس. لیکن ہم نے بہت تھوڑے وقت میں یکجہتی کا اظہار کیا ہے. ساری کمیونٹی آرگنائزیشنس نے جو ہم ایک دوسرے کو ایک عرصے سے جانتے ہیں, جس کا میں اس آرگنائزیشن کو باجی کو میں تقریباً 20 سال سے جانتا ہوں, ہم سب نے مل کے ایک میرا خیال ہے کہ ایگزامپل جو ہے وہ پوری ورلڈ میں قائم کر دی ہے کہ ہاؤ پاکستانی امریکنز کیم ٹوگیدر اور سرپیس اباؤٹ 3.5 ملین فوڈ پیکیجز ود ان 4 month of this pandemic. تو آئی ایم سو پراؤڈ کہ میری ٹیم جو پاکستانی امریکن یوتھ سوسائٹی ہے, خیبر سوسائٹی سے بھی ہیں نثار بھائی, اور ہم لوگ سارے اکٹھے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آج جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ کنٹینیوشن ہو رہی ہے فوڈ انسیکیورٹیز کی, اور ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں گے. لیکن دس از اے پرائڈ مومنٹ وی ٹیک the 14th of August, our independence, our recognition, who we are, where we're coming from. We are a very resilient community. We are a very resilient nation. We are an Indus, nation that has been for centuries. People came and left, but nobody can conquer us. That's how resilient we are. And this is the DNA that we have in us, and we have proved that wherever we go, ہم لوگ وہاں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں. تو بہت بہت مبارک ہو ACMW ٹیم کو. تو I will pass this mic to CG Ashali to also share some words about the Pakistani community and how hard we all came together and worked. ذکریہ صاحب آپ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ عائشہ علی صاحبہ, سونسل جنرل پاکستان نیو یارک, کاشف بھائی, غازیہ صاحبہ اور خواتین, سب کو السلام علیکم. سلام کے بعد چونکہ آج ایک بہت قیمتی دن ہے, 14 اگست بھی ہے, اور ہم جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں اور جو کام ہم ادھر پہ کر رہے ہیں وہ ایک یونیک کام ہے. ایسے کام چونکہ ہمیں وراثت میں ملی ہے, اور ہم جدھر بھی ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, دنیا کے کسی بھی ملک میں, ہم نے یہ روایات قائم کی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کام کریں. اپنے لیے تو ہر ایک جیتا ہے, وہی لوگ بازی لے جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. یہ پروگرام جس طرح اس نے بنایا ہے یقیناً یہ بہت قابل داد ہے کہ ان پینڈیمک جو بہت ہی سخت حالات ہیں, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جا بھی نہیں جاتے, لیکن ادھر پہ جو ہم کام کر رہے ہیں, جو ہماری آرگنائزیشن ہے, ہمارے پیپل ہے, اس کی حوصلے کو ہم بار بار داد دیتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اور ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا مسلم کمیونٹی ہے وہ ان لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم ادھر کے رہ رہے ہیں, ہم صرف اپنے لیے نہیں, آپ لوگوں کے لیے بھی جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. بس آخر میں صرف ایک کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. Next, I'd like to invite somebody who does not need any introduction. He is, I think, is considered an honorary Pakistani himself. He's the Council District 40th Council Member, Matthew Eugene, but I call him Brother Eugene because we go back so long and we did tremendous work together for the community, and you have been a strong supporter of this community. You have shown up to every little thing, happiness or sorrow. So without any further ado, it is my honor and privilege to ask Dr. Matthew Eugene to come in and share some words. Thank you so very much. Thank you so very much. Good afternoon. Good afternoon. Listen, before I speak, I cannot find any words to express, number one, the opportunity that I have to be here, but also I cannot tell you how happy I am. When I was coming over here, I looked up and I saw the traffic light in front of the mosque. This is a fight that we have been doing for many years. For those who know that I invited the mayor in my district for 2 times, and I explained to the mayor and the DOT
the need to put the traffic light in front of the mosque. That took time, but we were patient and we are fighting together. Now I'm so happy to see that this section of Konyana Avenue is safer for everyone. Congratulations, we did it together. And let me tell you something also. I already introduced the legislation for Little Pakistan, and that will be voted very soon also. Let me take the opportunity to thank you and for what you are doing for the community, and also for inviting me to be part of this very important, significant celebration. You know, at this time, New York is a very difficult place for everybody. At this time, the people in New York and Brooklyn, you know, they are divided. And many people are worried about many issues, many things. But it is so important that we come together to even like this, to show that we are still united, to show that we respect each other, to show that we appreciate each other. Because I do know, and you know that also, what makes New York City special is the opportunity for all of us, regardless of where we came from, to be who we are and to continue to follow our culture, our tradition, and also practice our religion. I know this ceremony is very important to you, and I know that this is very important for the children also, because they should never forget where the parents come from. It is a great honor for me to be here. You know, I want to thank Bazawi also for what she's doing. And I know that she's a strong, very powerful leader. And I'm trying to look, you know, to try to do what she's doing. But I hope that one day, when I got enough experience, I will be doing what you are doing for the community. To all of you, and also there is a young leader, you know, that this is a rising star too. And we are very honored and very proud of Kashif also. Because we know that he was close. And I'm telling you, watch him, okay? Watch him, he's going to be there, you know, very far. And New York, I don't know, in Brooklyn, but he will represent the Pakistani community very powerfully. To all of you, thank you so very much. Thank you for giving me the opportunity to be here. I cannot stay too long because I got to get back to the meeting, but I'm so proud to be here. Pakistan? Zindabad. Pakistan? Zindabad. Pakistan? Zindabad. Thank you so much. Thank you. Okay, next we have a representative from the Council of People's Organization, COPA, Asma Mehdi, who want to say some words, please. Assalamualaikum, and I guess 14 August Sabko Mubarak ho. Thank you so much. I'm from Council of People's Organization. My name is Asma Mehdi. I'm the Chief Operating Officer, and I just want to say thank you so much for having us here, Faza. We're really glad that we were able to cover up, especially during this pandemic, during this need. I mean, our country only runs on Fridays, and it's amazing to see that you're able to do other days, and we're able to help you, and you're able to help us, you know, connect the community together and serve them for what their needs are. So thank you so much. And I will let Mr. Raji know. He's our Chief Executive Officer who could not make it today. Thank you, though. Thank you. As you can see, CG, that we are surrounded by strong women leaders. Everywhere you see, the women of Pakistani American descent are leading in every cause. And this is a pride moment, and we look at the youth around us. I think the youth and women have taken the lead. This is the pride moment for Pakistani Americans. On that note, it's a good segue for me to introduce the President of Pakistani American Youth Society, Hassan Rashid, and Executive Director, Junera Juktai, to come and say a few words about the program that we did for past 4 months as well. Assalamualaikum everyone. My name is Junera Juktai, and this is Asra, our PACE president. She would like to, because us elders have stepped up in these years, we like to bring
in the front and let the youth speak. So I would like to have Asra say a few words. Assalamualaikum everyone, and I just would like to say that happy Independence Day in advance for everyone. It is absolutely an honor and pleasure to serve this community, the low Pakistani community over here, with so many different organizations that are working together, like in helping out their communities with such a pandemic that we have right now. And alhamdulillah, as pays, we serve our community with 100,000 meals within 100 days. And Ms. Baji is also doing an amazing job, and up until now she's doing an amazing job. And even today, it's such a great honor for us to come and join her. So thank you. Next, it is my pleasure to introduce the youth president of the ASMW. Rose Emma, please come and say Hi everyone, thank you for your time. My name is Rose and I'm leading the emerging chapter of the Youth Council of American Council of Minority Women. So essentially we aim to further the work that ACMW is doing and continues to do, particularly being targeting underserved communities with a special emphasis on youth mentorship in hopes that we can continue to uplift our youth in our communities who are underserved and lack knowledge and resources about multiple things that would enable them to uplift themselves and their families. And we hope to further the work that ACMW does with your help and support. So we appreciate if you could spread the word about our organization, as we are looking for new members to join our cause in hopes of uplifting the local community. Thank you. Seeing so many youth members right here, it's a good opportunity to also, from my experience, I'm saying, talk to each other, increase this network, and together, inshallah, you guys are going to do. You're a bright future of Pakistani Americans. Thank you very much. Next, I'd like to invite Khadija Panungo to come in and shine light on one of the most important issues of Pakistani Americans. Because Pakistan, you cannot talk about Pakistan if you don't talk about Kashmir. So these two things are not separate. They are intertwined since the inception of Pakistan, and it is my honor to have Khadija shine some light on Kashmir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Distinguished guests, thank you for coming here today. In order to make I'd like to shine a light on something that I feel like can never be stressed enough, no matter how much we talk about it. And that is what is going on in Kashmir. The brutality, the killing, the murders of innocent Muslims, all because of the Prime Minister of India, who is a nationalist, who is a terrorist, who is terrorizing us Muslims because he believes that Hinduism is the only religion that should be in the land of India, which is wrong. And we choose to inflict that ignorance upon ourselves. As you can see, the United Nations and the US government had not said anything. Suddenly they've become blind. We choose to not speak about this issue because we feel that we should impress the UN, we should impress the United States. No, we're Muslims, we're Pakistani, we need to stick to who we are. We need to love our culture, we need to love our religion. Look over here, this is a Pakistani flag, but what's over there? It's a Kashmiri flag, because where there's Pakistan, there's Kashmir. I want to say something that one of my favorite authors, Dan Brown, has once said. I quote him: "History is always written by the winners. When two cultures clash, the loser is obliterated, and the winner writes the history books, books which glorify their own cause and cause disparage to the conquered foe." As Napoleon once said, "What is history but a fable agreed upon?" Ladies and gentlemen, I urge each of you to reach out into your heart and feel the pain that the Kashmiri people are feeling. Feel their suffering. Feel the loss that they are losing. Feel the loss that they feel when they see their family members dying in front of their faces. Blood shed onto them. Please, please let our history not be a fable. Let our history be one that we can look back upon and smile at and say that we truly brought justice to the table. Thank you very much.
Thank you, Khadija. Truly, the baton has been passed to the youth, and the youth will keep this awareness of independence of Kashmir from the occupying forces of India, inshallah, and we'll continue to voice that fight for their freedom, inshallah. On that note, we are joined by one of my close friends and a very outspoken person on the Kashmir issue. Brother Raja Razak is here among us. Brother, if you can come in and shine some light as well on 14 August and the Kashmir issue as well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो और बीबी जान और इनकी पूरी टीम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज इस कोविड के सीज़न में भी उन्होंने एक इस खूबसूरत दिन की मुनासबत से एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। 14 अगस्त हमारी तारीख का ऐसा दिन कि जिसने बरसगीर के मुसलमानों को एक नई शनाख्त दी, एक नया मुल्क दिया। इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई। उन लोगों से जब हम बात करते हैं, उन बुजुर्गों से जो उस वक्त माइग्रेट करके आए, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो किस कर्म और कितनी मुसीबतें झील के इस पाकिस्तान तक पहुँचे हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है और हमसे बाद में आने वाली जो हमारी यूथ है उसका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के उस मकसद को आगे लेके चले। और हमने साथ साथ ये भी देखना है कि ये जो 73 ईयर हमारे गुजरे हैं, इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया। जहाँ पे हमारी अचीवमेंट की बेशुमार है, वहाँ पे हमारे फेलियर भी काफ़ी है। हमारा एक वक्त था कि जब पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क था, बदकिस्मती से 71 में वो दो लख्त हो गया। ऐसी गलतियां हमने नहीं दोहरानी। हमने पाकिस्तान को और मजबूत करना और बेहतर लेके जाना है। और जैसे छोटी बच्ची ने कश्मीर की बात की, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो उसमें हमने उन कश्मीरियों को नहीं भूलना जो पिछले 73 साल से इंडिया की हर तरह की एट्रॉसिटीज़ और ब्रूटैलिटी का शिकार हो रहे हैं। और स्पेशली 1 साल से जब से इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है और पूरा मकबूजा कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है। इस 4 महीने का जो कोविड का सीज़न था, उसमें दुनिया को जो है वो चकरा के रख दी है, मगर कश्मीरी आज भी इतने सालों से उस मुसीबत से लबोट गज़मा है। हमें कश्मीरियों के साथ भी यकजहती का मुजाहरा करना है और उनको इस खुशी की घड़ी में याद रखना है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Sure, absolutely. अमेरिका की फेवरेट स्पोर्ट्स बेसबॉल है और उसमें जब गेम जीत रहे होते हैं तो 9th इनिंग के अंदर एक क्लोजर आता है जो गेम को ख़त्म करता है। तो इसीलिए I have to give a reference, American reference. I'm so sorry. So for this taqreeb, I would not say that the closer for this event is our. Very proud to say, and in a very short amount of time, I got to see the CG Aisha Ali, what she has done and how she thinks about the community, the reimagining of how consulate can interact with their Pakistani constituents and overseas Pakistanis. She's doing a tremendous job. I wanted to highlight that we are truly proud to have you here and continue to work and look for better solutions and better things as a community and from the consulate. So without further ado, it's my honor to introduce CG Aisha Ali to say some words on today. Thank you, Kashyap. And आप इस वक्त आए नहीं क्योंकि मेरी second innings है। So maybe, but it's such an honor and a pleasure to have this opportunity. I'm so sorry. So where was I? Yeah. It's such an honor and a pleasure. मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बाज़ा रूही साहिबा का जिन्होंने मुझे ये opportunity दी। Thank you. And I also want to begin by appreciating, and I think words are not enough for what you have done for the community during the pandemic.
सो अक्सर हमारी कम्युनिटी के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि हम ज़रा सोशली कंजर्वेटिव लोग हैं, ख़वातीन घर में रहती हैं. But in the last 4 or 5 months, during the worst pandemic that the world has seen over a period of 100 years, the way our women have stepped out and stepped out, I think it has been amazing. So everyone in ASMW, all of you and all the other women's organizations, the way you have worked, it's been amazing. जितना भी आपका शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है. और यहाँ आने के बाद, देखने के बाद, and the diverse crowd जिसका आप ख्याल रख रहे हैं, it's not just Pakistanis or people from South Asia. I see all kinds of communities, all sorts of people. The spirit is amazing. It is outstanding. Thank you so much for your work. Kashif का भी बहुत शुक्रिया. Kashif has been such a huge support to the consulate and to the community during the pandemic. Despite his very great personal loss, the death of his mother due to COVID, the way that you have led the community, Kashif, thank you so much. Kashif और पेस के बारे में बताना चाहूँगी जो लोगों को भी मालूम नहीं है कि आज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक फॉरेन मिनिस्टर्स ऑनर्स लिस्ट का ऐलान किया है 14 अगस्त के मौके पे. और हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ख़ासतौर पे जिन्होंने पेंडेमिक और कोविड के दौरान काम किया है, उनको रिकग्नाइज़ किया गया है. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि हमारे न्यूयॉर्क में से पेस इज़ वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस Zunaira and others were there, the young leaders. आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. इसके अलावा APAG और डॉक्टर एजाज अहमद ऑफ AP पैक हैज़ ऑल्सो बी रिकग्नाइज्ड. मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. जैसा कि गवर्नमेंट ने हमेशा से कहा है कि हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं. So several initiatives have been launched और ये जो ऑनर्स लिस्ट है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है. और इसमें मैं आई वांट टू रीइटरेट हियर बट द फॉरेन मिनिस्टर से कि आप लोग हैं असल में द लीडर्स, द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, द पीपल, द ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एक्चुअली द ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान. जिस जज्बे से आप लोग काम कर रहे हैं. और एक और बात उनकी दोहराना चाहती हूँ कि शुरू में पेंडेमिक में हमें बताया गया था कि जी चूँकि इकोनॉमिक स्ट्रेस आ रही है और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, तो रेमिटेंसेस जिनके जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है पाकिस्तान की इकॉनमी का और जो आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसमें बहुत अहम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो कम हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रेमिटेंसेस ज़्यादा बढ़ी. जिस तरह से आप लोगों ने अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का ख्याल किया है, प्राइम मिनिस्टर्स कोविड रिलीफ फंड में आपकी कंट्रीब्यूशन रही है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वर्क, ऑल योर एफर्ट्स. कश्मीर के हवाले से चूँकि आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से इसके बारे में तबसरा किया, उन्होंने बताया है. आपको बताती जाऊँ कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 साल हुए हैं जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया. उसके बाद कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया गया जो अभी तक जारी है और जो लॉकडाउन में भी जारी रहा, उसकी हमने एक कमेमोरेशन देखी पाकिस्तान से. बहुत सारे इवेंट्स भी हुए, बहुत सारे वेबिनार्स भी हुए जिसमें आप सब ने हिस्सा लिया. और ये बताना चाहूँगी कि डिस्पाइट कॉन्डेमनेशन, ग्लोबल एंड वर्ल्ड वाइड कॉन्डेमनेशन, जैसे खतीजा ने भी कहा कि मोदी सरकार जो है अपनी फैशिस्ट पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर रही है बहुत ज़्यादा ब्रेजनली. और अब एक डेमोग्राफिक चेंज किया जाने लगा है जम्मू एंड कश्मीर में. बाहर से लोगों को लाकर लाखों की तादाद में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बसाया जा रहा है ताकि आइंदा जो डेमोग्राफी बने कश्मीर की वो उसकी असली रूट्स और उसकी असली ओरिजिन से बहुत मुख्तलिफ हो. तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें. I appeal to all the Pakistani Americans and the diaspora abroad to continue to raise their voice. And not only that, but leaders like yourselves, Baza, Kashif, Rasid Sahab, and others, you need to also continue to raise this with your elected officials. Because if you tell them what's happening in Jammu and Kashmir, they're illegally occupied in Jammu and Kashmir,
it's what you say that is going to resonate. And I know that you do a lot. I saw a lot of protests in New York, in the Times Square. I saw the billboards. I think they were a reflection of the sentiment of the community against what's happening to our Kashmiri brothers and sisters in the illegally occupied Jammu and Kashmir. So my appeal to you is to continue to make these efforts. And the more we do, the better it is for them. A little bit about the COVID situation in Pakistan, which alhamdulillah continues to improve. And we're reopening our economy and are on track to inshallah have a robust economic recovery. I want to thank you so much for your patience, for listening to me in very hot and humid conditions. But thank you so much. इंडिपेंडेंस के हवाले से बहुत मैं आपके इस जज्बे की कदर करती हूँ कि हज़ारों मील दूर यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे का केक मैं देख रही हूँ और पीछे माशाल्लाह इतना बड़ा झंडा है. So thank you so much for doing this. And inshallah, Pakistan continues to be on track to become one of the very stable, developed, important powers of not only South Asia but of the world. बहुत शुक्रिया आपका और आज़ादी सबको मुबारक. Thank you so much. Happy Independence Day. Thank you. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पाकिस्तान की हमारी आज माशाल्लाह ACMW की टीम जो है, एक्सक्यूज मी, ACMW की टीम 5-5 लोग करके आ जाए. जो जिनकी पहले पिक्चर हो जाए वो चले जाए, फिर जो दूसरे काम कर रहे हैं वो आ जाए ताकि सबको मौका मिल सके. और उसके बाद जो हमारे गेस्ट आए हैं वो भी सोशल डिस्टेंस रखते हुए अपनी तस्वीर बनाएं, क्योंकि हमें मालूम है कि आयशा जी से सभी बहुत प्यार करते हैं. माशाल्लाह इतनी प्यारी हमारी कौंसल, तो इसलिए सबको बहुत शौक होता है मिलने का, तस्वीर का. तो पहले 5 लोग आ जाएं अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वीमेन के, और जो यूथ टीम है इसके बाद जो है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी. तो मैं चाह रही हूँ यूथ का एक ही ग्रुप कर लूँगा. दरम्यान में कोई बंदा नहीं आए, दरम्यान में नहीं आप इधर आ जाए. वहीदा भाभी, इरम आप इधर आ जाए. पाकिस्तान 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 टीम और उसके बाद यूथ टीम जी, ACMW के बाकी मेंबर्स आ जाएं. फिर हमने अपने गेस्ट को भी करना है और यूथ टीम
73rd Independence Day. And the pleasure, you know, like whatever we are doing in our love of our country. So thank you so much for inviting us, and thank you so much, a pleasure to come, and I'm going to represent this, you know, this culture soon for you. Thank you so much. Thank you. ये हम अपने पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक आयशा जी को चादर पहनाएंगे, क्योंकि ये हमारा बड़ा खूबसूरत कल्चर है कि जब हम अपनी खवातीन को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। हमारे दीन में, हमारे मुआशरे में खवातीन को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो सल्लम की उम्मती हैं जिन्होंने खवातीन को एक मुकाम दिलाया, तो उन्हीं की पैरवी करते हुए मैं आज आयशा जी को तमाम खवातीन की जानिब से, नॉट ओनली अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, तमाम वो औरतें जो कि अमेरिका में हैं, तमाम वो औरतें जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो तमाम वो औरतें जो खेतों में काम कर रही हैं, जो घरों में काम कर रही हैं, जो बड़े उहदों में हैं, जो छोटी जगहों में, हर एक औरत की जानिब से मैं आज आयशा जी को ये चादर पहनाती हूँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे शायद कॉमरेड साहब को मुतारिफ ना कराना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जहाँ कहीं भी कोई भी मुजाहरा होता है, स्पेशली कश्मीर का, तो और कोई होना हो, ये अपनी लाल टोपी पहन के सबसे पहले खड़े होते हैं। और इन्हीं को देखते हुए हमने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कलर जो है वो रेड किया है कश्मीर के साथ। शायद कॉमरेड साहब को मैं तब से जानती हूँ जब मैं नई नई अमेरिका में आई थी और मेरा कोई आइलैंड में कोई ऑफिस नहीं था, क्वींसबर्ग मैनहट्टन में ऑफिस था। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे इंटरनेशनल क्राइसिस सेंटर में मुतारिफ करवाया, और हमने बहुत सारे उस ज़माने में प्रोटेस्ट किए थे इराक के लिए और फ़लस्तीन के लिए। तो शाहिद साहब से मेरा ताल्लुक उतना ही पुराना है जितना मुझे अमेरिका में हो गया, यानी 20 साल का, और मैंने मुजाहरे करने, नारे लगाने, सब कुछ इनसे सीखा। तो शाहिद साहब तशरीफ लाइए। ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर हैं, और मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना मैंने इनसे सीखा। Assalamu alaikum. Honorable guest, Consul General Aisha Ali, all of you. I'm very much proud being a Pakistani that we are sharing the good values of Pakistani nation. I'm going to tell everybody the reason of Pakistan, only one thing: respect and justice. Our founder, Muhammad Ali Jinnah Marhoom, Tariq Rahmat, one of the guys who know the principle of the humanity. And from one first day, you are a Pakistani and you are a proud nation of Pakistan. You never ever defend any kind of occupation by anyone, by any superpower, USA or British or French or German. We oppose the occupation in Kashmir by Indian 900,000 army. We oppose from the day one Palestinian cause, and we oppose any kind of operation of oppressed nations. We fought them, like in Somalia now, by the USA and West. I want to talk Pakistan, USA Freedom for which I'm a Secretary General. We want to talk straight, clear. We want to respect, and we will give you the respect. And thank you very much for the Pakistani women. They give us so much pride. Yesterday there was an American Pakistani woman, skilled woman. They started the celebration of 74, 73rd, because our information minister Shibli Faraj said 74, but basically I think it's 73rd. But anyway, मुबारक to you, all of you. अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती हो। खुदा हमारे यूथ को जो है, जो हमारी सबसे बड़ी कुव्वत है, और उसके साथ साथ मैं कौंसिल जनरल साहब से ये कहूँगा, साहबा से, कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं इस कोविड डे में, थोड़ा सा ज़रा गाइड करें तो उनको कितने दिन पहले अपने टेस्ट करवा लेना चाहिए, या उनको कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज पेश आ सकती हैं। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कौंसिल जनरल इस दौर में ये काम कर सकता है, और उसकी बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा मरहला, ये जो आपका नादरा का काम है, ठीक है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम बनाया है, मगर मैं बात आपको साफ कह दूँ, हमारा मुकाबला हमारी नानी माँ दादी माँ जिसको टेलीफोन का भी पता है,
तो लेट्स फेस दिस। आयशा अली, आपने ज़िंदगी में पढ़ा है बहुत ज़्यादा, इन लोगों को ज़रूरत है आपकी मदद की। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस पर तवज्जो दें। पाकिस्तान जो है वो हमेशा पाइंदगी के लिए रहेगा, क्योंकि हम जस्टिस के लिए जिंदा हैं। खिलाफियों की कोई अहमियत नहीं होती। अगर इंडिया ये समझता है, वहाँ की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ये समझती है कि वो ताकत के जोर पर तो अमेरिका जैसे लोग जो हैं 60-70 में वियतनाम में उनको ऐसे भगाया था कि दुनिया देख रही है। अफगानियों को देखो, सीधी सी बात है, आदमी को अपने अंदर गैरत पैदा करनी चाहिए। और वो जो लोग सियासत करते हैं अपने मुफादात के लिए जरूर करें, मगर पाकिस्तान के नाम पर नहीं करें। आपने लूटा है, आपको पैसे वापस करने होंगे। आपने इस कौम के साथ ज्यादती की है। हिसाबदार वहाँ बैठा हुआ है लंदन में, भाग कर बैठा हुआ है, वज़ीर आज़म के जहाज में बैठ कर गया है। ये चीज़ें हमें मान लेनी चाहिए, ये चीज़ें हमें मान लेनी चाहिए। आपको अदालतें बुलाती हैं, आप जाइए, अदालतों में पेश होइए। अगर आप पत्थर ईंटे लोगों को लेके जाते हैं, ये सियासत की बात नहीं है, ये हकीकत की बात है। और हमें सुननी चाहिए उन लोगों को जो आज भी तावन कर रहे हैं उन लोगों से। मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे आप अच्छा कहें बुरा कहें, मगर मेरा फ़र्ज़ है कि अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए। इमरान खान कोई अल्लाह मियाँ की गाय नहीं है, उसके बारे में सिर्फ लोगों की ये बात है कि वो हरामकारी नहीं करता, वो बदमाश नहीं है, वो लुटेरा नहीं है, करप्शन नहीं करता। हाँ, उसने ड्राइवरी की है बहुत बड़े लोगों की पाकिस्तान के लिए। हमें ऐसे लीडरों की ज़रूरत है और हमें इज्जत करनी चाहिए। मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान की बका के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए बना है। हमारी माँ बहनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी तारीख उठा के देख रहे हैं, हिजरत का जो दौर गुजरा है उस वक्त की सबसे बड़ी हिजरत थी। तो मैं जाते जाते सिर्फ एक कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकन कम्युनिटी जो है, वुमेन्स जो है, हमारे मिनॉरिटीज़ की बादरूही, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे। एंड यू वुमेन यू मेक अस प्राउड, यू वुमेन्स यू मेक अस प्राउड। और हम कितने खुशकिस्मत है कि माशाल्लाह आयशा जी भी हमारे साथ हैं। खासतौर पे आपके लिए कोविड के हवाले से बताना चाहती हूँ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट की कोविड टेस्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इनिशियली जब कोविड वाज एट इट्स हाइट तब ये सेफ गार्ड्स भी रखे गए, बट वो और हमारे कंट्रोल से और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बॉडी पाकिस्तान और लोकल पाकिस्तान, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। हाँ, एयरलाइंस जो है, एतिहाद है, एमिरेट्स है, have placed in their own SOPs, जिसमें COVID test भी शामिल है. The government of Pakistan does not have any requirement for a COVID test. So, और ना ही वहाँ पर किसी को quarantine नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव रेट जो है बहुत कम है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की रेट के बहुत कम है. So we are holding in. We are on a track where we are improving every day. So the initial COVID SOPs, जिसमें टेस्ट ओवरसीज के लिए शामिल था, is no longer. नादरा का बहुत बड़ा मसला है। लोग लूट रहे हैं हमारी माँ जातियों को, नानियों को। कोई एक आदमी वहाँ दिखाई किसी इंसान कैसे लेने आ सकते। जी मैं एक्चुअली प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक अनाउंसमेंट है जो काशिफ करना चाह रहे हैं, तो मैं काशिफ को प्लीज़। श्योर, एब्सोल्युटली। अनाउंसमेंट से पहले मेरा ख्याल ये जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतनी दफ़ा लोगों को बुला रहे थे। तो जस्टिस नहीं होगा कि मेरा और बाजी का बड़ा पुराना रिश्ता है, तो एक फैमिली रिश्ता है इनके साथ। और ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर ये जो एक पहली जिसमें पाइनियर होता है एक वुमेन एम्पावरमेंट का, तो बाजी वो एक वो आइकॉनिक एक वो हैं पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। तो वी वांट टू रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट कि हिस्टोरिकली वो जब हम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में बात करें, इस चीज़ का एहसास रखें। तो ये एक बहुत पुरानी एक जद्दोजहद है जिसकी फ्रूट्स जो हैं हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि बिकॉज कोविड-19 और खासतौर पर ये CG आयशा अली के लिए रिक्वेस्ट है। आई नो वी टॉक्ड अबाउट इट, क्योंकि कोविड-19 में हम लोगों को परमिट्स नहीं मिल रहे मेलों के और परेड्स नहीं हो रही ऑफिशियली। तो चीज़ जो अलाउड है वो कल्चरल या कैरावैन ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोग रिजिलियंट तो हैं ही, लेकिन फेस्टिव भी बड़े हैं। हमें बहुत शौक है फेस्टिविटी करने का। तो 14 अगस्त बगैर फेस्टिविटीज़ के नहीं जाने देंगे हम, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया में खत्म भी ना हो जाए। तो इंशाल्लाह संडे को
संडे को जो अगस्त 16 है 4 बजे हम लोग एवरी एच और कोनिया एवेन्यू पे सारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जितनी ऑर्गेनाइजेशन सब लोग जाएंगे। 6 हमारे हम लोग फ्लोट्स का नाम यूज़ कर सकते हैं, उनको फ्लैट पैड्स कह रहे हैं क्योंकि वो लीगल लैंग्वेज है। फ्लैट पैड्स निकलेंगे लेकिन वो फ्लोट्स नहीं है। तो 6 होंगे माशाल्लाह, सब ऑर्गेनाइजेशन ने मिलजुल के उसको सजाना है और सब सज रहे हैं। एक्चुअली जितना भी बात कर रहे हैं आप सजा चुकी हैं माशाल्लाह, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन सजा रही है अपने और माशाल्लाह 50 के करीब एग्जॉटिक और विंटेज खूबसूरत गाड़ियाँ होंगी बच्चों के लिए देखने के लिए, कम्युनिटी के लिए देखने के लिए, और साथ मोटरसाइकिल वगैरह होंगे। यहाँ से काफिला चलेगा अपनी ऐसे रिबन कटिंग सेरेमनी होगी जिसको गेस्ट ऑफ ऑनर वाली सीजी हैं जो आपके काटेंगे, इलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे आपके साथ इस दिन, और वहाँ हम लोग ये एम्फसाइज करेंगे पाकिस्तानी मैथड 73rd हमारी जो एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस की 74th। एक्चुअली दिस इज द कंफ्यूजन, थैंक यू वेरी मच एंड फॉरेन मिनिस्टर हैज आल्सो मेंशन्ड करेक्टेड दिस इज 74th। So we will talk about this on FBH on Sunday this 4 PM which is August 16। और यहाँ से सिलसिला चलेगा प्रॉस्पेक्ट जो पार्क है उसका जो लूप है सर्कल है वहाँ से घूम के हम लोग वापस यहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटीज को हमने बताना है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, यहाँ हैं, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग वी आर लाउड एंड क्लियर इन आवर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। हमने बताना है कि हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबकी पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। इंडियन कौंसल थाने के सामने 15 को मुजाहिरा है, वहाँ उसकी अनाउंसमेंट हो रही है इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद कुलसूम भट्ट साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी जो कि हमारी इवेंट कोऑर्डिनेटर मैनेजर है, आए और अपना काम संभालें, हम थक गए हैं भाई। केक काटें, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को देखें। पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान इधर इधर आ गया पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान कैसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ चलती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ये मैं डेडिकेट हम सब कर रहे हैं अपने पाकिस्तान में तमाम बसने वाले पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों बूढ़ों बुजुर्गों जवानों सबको हम सब ने ये डेडिकेट किया उनके लिए 14 अगस्त के मौके पर साथ में। आ जाना पिक्चर में आ जाए सामने को बुलाना, सामने आ जाए, सामने आ जाए, बाला दरमियान में इनको ले आओ। Good evening, thank you. My name is Shana Milius and I'm actually Director of Outreach for Congresswoman Yvette Clark. She represents the 9th District. I just want to say thank you. Unfortunately, she couldn't make it today. I just came by to see the festivities. I missed the cake. Darn it. Oh, I'm so sorry. But otherwise, we are in such an array of hope for this community. And last night I went to an event and there's someone over here, I forgot her name, unfortunately. She has her event last night. I went to it and it was the first time I've ever been to a Pakistani event. So I just want to say thank you so much for supporting our office, as well as we look forward to building a bridge in regards to working with our office on a variation of activities. And one other thing is the census. I know there's an event that's happening on Sunday, so we have the census coming as well. So again, thank you so much.
Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. Definitely we're gonna buy a new cake for you. Please tell Miss Clark we missed her. Yes, we all missed her a lot. You know we love her. Yeah, in the past we supported always, and in the future we will support her because we love her. Thank you so much. हम अपना केक खाएं. अभी ठहर के पहले सब हो जाए अच्छा आप आइए ऊपर हाथ रख लेना साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, ये बच्चा मांगे, ये औरतें मांगे, हर बंदा मांगे, कश्मीर मांगे, है हक हमारा जी. Modi, listen carefully. Buchu yi vanun chaha ke Kashmir chu son, Kashmir chu Pakistan sun sherak. Modi, kan khulit, och khulit, boz dimag hazir kar. Kashmir chu son, Kashmir chu Pakistan sun. Kashmir, Pakistan zindabad. Pakistan zindabad. Pakistan zindabad. Thank you. नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. आज कोनी आइलैंड लिटिल पाकिस्तान में पाकिस्तान डे मनाया गया और गोश्त की तकसीम की गई और इसमें मोहतरमा बाज़र हुई ACMW ने इनिशिएट किया और विद द हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड USA. एंड फॉर दिस would you like to say a few words and yes. I request yeah, we are very grateful to Islamic Relief of USA because always they helped our community, they helped everywhere in the world. You can see Islamic wear everywhere in the world, and we feel very honored and proud that we are the partner of Islamic Relief of USA, and with the help of Islamic Relief of USA, every year we are able to distribute the more than 2,500 pounds every year, and alhamdulillah. And also in the Ramadan we distribute the Ramadan food boxes, and this time in this difficult time in COVID we also received a grant from the Islamic Relief of USA, and we were able to distribute the grocery door to door for the Ramadan. And not only Ramadan, we distributed the grocery all the communities, and thank you so much Islamic Relief, they always help us. Thank you so much.
Assalamu alaikum everyone, my name is Dunya Abdullah. I am Islamic Relief USA's Northeast Regional Programs Coordinator. I've been on the job now for almost 2 years, and ever since the beginning I've been working with Baza and her team. Mashallah, the work here speaks for itself. I wish we could get a close-up of how the street looks. People just keep on coming because they know they could depend on ACMW and the work that they continue to do. Mashallah, I really look forward to coming and seeing more of their programming. I know we do Ramadan and Qurbani with each other, but there's so much more to do. I could always rely on you and your team, and again, I look forward to the next couple of years as we work to strengthen this community and this partnership, inshallah. Inshallah. Yes, brother Mustafa. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mustafa Badruddin. I'm the Northeast Development Coordinator for Islamic Relief USA. I've been working with Islamic Relief since February, so I'm pretty fairly new. But alhamdulillah, I feel just at home, and I'm very, very honored and happy to be here with the American Council of Minority Women and Sister Baza. Wallahi, we really, really appreciate the work that you do for the community, and we're very happy to be able to assist our brothers and sisters in need here in Brooklyn on Coney Ave, and all of our brothers and sisters who are from Pakistan and from Kashmir, and we're all brothers and sisters in Islam, and hopefully we can continue to do good work together. Jazakumullah khair for all your efforts, and assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam. Thank you so much. I also very thankful for your team, for Islamic Relief, and Baza Rui. नाज़रीन, मैं फिर कहना चाहूँगा कि चांद रात तो नहीं हुई, लेकिन आज का ये जश्न आज़ादी का इवेंट यहाँ पे चांद रात से भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि माशाल्लाह इस दिन हमारा मुल्क प्यारा मुल्क मार्ज़ वजूद में आया था। चांद रात की अहमियत अपनी जगह, लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि हमें सबकी जान प्यारी है। सबके लिए हमने अपनी कम्युनिटी के लिए चांद रात का आगाज़ किया था, और इस साल नहीं की क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड की वजह से, लेकिन हम चाहते हैं कि हर हमारे जितने भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, नॉट ओनली मुस्लिम, वो हेल्दी रहें, सेफ रहें, और इस वजह से हमने अपनी एक चांद रात किया। हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कई चांद रातें कुर्बान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे हम हर पाकिस्तानी स्टैंड करता है कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, मजलूम बहन भाइयों के साथ, और उसके लिए भी आवाज़ उठाई गई आपके इस प्लेटफॉर्म से। उसके लिए हमने ये किया है कि लास्ट ईयर अशरफ साहब आपने देखा होगा, जैसे ही कश्मीर में लॉकडाउन हुआ था तो हम लोगों ने उसी दिन परमिट लेके तो इंडियन मिशन के सामने जुमे की नमाज़ करवाई थी, जो कि एक हिस्ट्री है कि उससे पहले कभी इंडियन मिशन के सामने इतनी बड़ी जुमे की नमाज़ नहीं हुई। और आपने देखा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो कलर था वो ग्रीन था, तो हमने कश्मीर के साथ सॉलिडरिटी का सबूत देने के लिए अपना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कलर है वो हमने रेड कर लिया है, और ये कलर कश्मीर की आज़ादी तक हम रेड ही रखेंगे, क्योंकि हम कश्मीरियों को भूल सकते हैं। हमने देखा हमारे झंडे में भी हमने कश्मीर का झंडा भी लगाया था, क्योंकि पाकिस्तान का दिल कश्मीर है, तो दिल के कश्मीर हमारी धड़कन है, तो जब दिल ही ना हो, धड़कन ना हो, तो उस वजूद का क्या फ़ायदा था। हम कश्मीरियों के साथ थे, हैं और रहेंगे, और हम उनको कभी भी किसी मौके पर नहीं भूलेंगे। हम अपनी आज़ादियों के जश्न में भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ना भूल सकते हैं, ना कभी भूलेंगे। जी, आप कश्मीर के बारे में एक ज़रूरी बात और कहना चाहेंगी? जी जी ज़रूर। और मैं ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हमने जो रेड कलर किया है, इस आस पे, इस उम्मीद पे किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा, और हमारा ये जो रेड कलर है दोबारा से हम अपना पुराना लोगो भी कैरी करें, दोबारा से ये ग्रीन होगा, और इंशाल्लाह ये ग्रीन होगा। बहुत शुक्रिया।